and thoughts result in action. Good evening. Today marks as an important day in the journey of Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj. Let us commence this historical event with the lighting of the lamp and Saraswati Vandana. I request our chief guest, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, distinguished guest Shri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Special Justice Honorable Mr. Justice Manoj Misra, Judge Supreme Court of India, and other dignitaries to come forward for the lamp lighting ceremony. Thank you all. May the light of the lamp guide us all towards the road to enlightenment. Let us take a moment to express our sincere appreciation towards our esteemed guests on the dais who have been the pillars of support, source of knowledge and inspiration for all of us. I would now like to invite on stage Senior Professor Dr. Usha Tandon, Vice Chancellor, Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, to offer felicitation to the chief guest of the day, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India. So if you could please come up on the stage. भैया थोड़ा साइड तो हुई है थोड़ा साथ सामने छोड़िए
May I again request our Vice Chancellor to assist in offering felicitation to our distinguished guest for today, Sri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. May I again request our Vice Chancellor to assist in offering the felicitation to our distinguished guest for today, Sri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. This is the moment to felicitate our special guest for the day, Honorable Mr. Justice Manoj Misra, Judge, Supreme Court of India, Visitor, Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj. I request Professor Dr. Usha Tandon to assist for the same. Thank you so much. Without any delay, I would now invite on podium a very well-known name in the field of legal education, a dynamic lady known for her outstanding contributions in the field of law, Senior Professor Dr. Usha Tandon, Vice Chancellor, Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, to deliver the welcome address. Namaskar and a very good evening to all of you. The inauguration of Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj marks an historic day for the sheer reason that it is being inaugurated by none else than the visionary and sapient Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, in the august presence of this university's founding father, Shri Yogi Adityanath Ji, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, and other notable dignitaries, including Honorable Mr. Justice Manoj Misra, Supreme Court of India and visitor of this university, Honorable Mr. Justice Arun Bhansali, Chief Justice of Allahabad High Court and the Chancellor of this university, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General Government of Uttar Pradesh, and Shri Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India. We are truly honored to have Honorable Dr. Justice Chandrachud as the chief guest for this occasion, a judge with a vision for the future, possessing a brilliant legal mind. His Lordship is a champion of safeguarding personal liberty, upholding the basic tenets of the Constitution. We all know that he is supremely articulate and has provided invocating new interpretations of the law, even though it means having a different view from others, including his own father, former Chief Justice of India, Justice Y.V. Chandrachud. His Lordship's humility is a rare quality in a person of his stature,
With his youthful smile and empathetic persona, his lordship enjoys a very high esteem in legal corridors. Mr. Chief Guest of this occasion, Honorable Mr. Justice D.Y. Chandrachud, we extend you a very warm and cordial welcome. Please give a big round of applause on this occasion. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। अपने विशेष व्यक्तित्व और दृढ़ नेतृत्व के साथ आपने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए अद्वितीय प्रयास किए हैं। सामाजिक विकास के प्रति आपकी अटूट निष्ठा एवं योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सामाजिक उत्थान विशेष रूप से शिक्षा के लिए आपकी दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण यह आपके द्वारा शिल्पित किया हुआ प्रयागराज का यह विधि विश्वविद्यालय है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमें पथ प्रदर्शक के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए हम गौरवान्वित हैं और इस अवसर पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस सभागार में this house is also honored to have the grace of sitting Supreme Court judges. Honorable Mr. Justice Rajesh Midhalji, we extend you a very warm welcome. And Chief Justice from the Bombay High Court. We are also having the Honorable Judges of the High Court of Allahabad and former judges, members of General Council, members of Executive Council, members of Academic Council, Vice Chancellors, teaching faculty, especially from University of Delhi too, and other eminent personalities. A very, very hearty welcome to all the dignitaries of the dais. And again, a very warm welcome to the beautiful ladies sitting here, what I could say on this particular section. Well, the presence of the prospective students sitting there on the gallery, this balcony with their guardians who have applied for admission to this university boost our confidence on this occasion to move ahead. हमारे बीच में टीचिंग फैकल्टी भी है और जो प्रयागराज में हमारी सिस्टर लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी 5-year लॉ स्कूल के छात्र हैं और इस ओकेजन पर I extend you all a very special welcome. It's really, I think, your presence matters a lot for us, the students and the parents of the students. I also find a good presence of the media. Welcome you all too. Well, पिछले कुछ दिनों में जब से हमारी तैयारी शुरू हुई इस कार्यक्रम की, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने ये क्या नाम दिया है इस प्रोग्राम को, इनॉग्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? वेल, मतलब बहुत सिंपल है कि इस वक्त हम यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेशन शुरू होने जा रहा है उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 2020 में एक्ट पास किया गया, फिर उसके कुछ साल के बाद इस यूनिवर्सिटी को एक बहुत गौरवान्वित नाम दिया गया बाय एडिंग द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये अभी तक 3-3.5 साल का नेस्टिंग पीरियड था and now we are, as I said, gathered here for the inaugural ceremony for the academic session, जो हमारा अब 2024 में शुरू होगा. Well, this is different from the commencement of the classes. So when we will start our classes, there will be another program for that. Why? Because जब हम किसी academic session की शुरुआत की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें include होती हैं. Holding of classes उसका सिर्फ एक part होता है. So for this, I will say, as a fledgling institutions, we have been flapping our wings for the past few months. हमने अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू किया,
हमने टीचिंग फैकल्टी का रिक्रूटमेंट शुरू किया, हमने सपोर्टिंग स्टाफ के बारे में भी जो चिट्ठियां शासन को लिखनी थी वो सब लिखी हैं, एंड नाउ द टाइम हैज कम टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। डर है, नर्वसनेस है फॉर दिस फर्स्ट फ्लाइट जो क्वाइट नेचुरल भी है, बट विद स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग विंग्स फ्रॉम द शासन एंड द जुडिशरी वी आर क्वाइट होपफुल कि हम एक ऊंची उड़ान भर सकेंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग जो है हमारे चीफ गेस्ट को और चीफ मिनिस्टर साहब को सुनने के लिए आतुर हैं। आई अपोलोजाइज इफ आई एक्सटेंडेड माय टाइम, एंड नाउ मैं आप सबका दोबारा से स्वागत करते हुए और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. I would now like to humbly invite Shri Manan Kumar Misra, Chairman, Bar Council of India, Member General, Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, to please address our audience. Honorable Mr. Justice D.Y. Chanchurji, the Chief Justice of India and the chief guest of today's function, Honorable Mr. Aditnath Jogi ji, the Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Mr. Justice Manoj Misra ji, Judge Supreme Court of India, Honorable the Chief Justice Allahabad High Court, Honorable Judges of Supreme Court, the Chief Justices of other High Courts, the Honorable Judges of Allahabad High Court, Mr. Ajay Misra ji, the learned Advocate General, Uttar Pradesh, Mr. Usha Tandon, Vice Chancellor of this newly established National Law University, the teachers, students, guardians. I also find Mr. Shiv Prasad Gaur, the Chairman, Bar Council of Uttar Pradesh here. Ladies and gentlemen, to establish any institution and to get it flourished, rightly she says, it to have. It's very, very difficult. It requires a lot of devotion, hard work, and the luck also plays some part. लेकिन मुझे लगता है कि आज जो उद्घाटन, the inauguration which is being done today by Honorable Mr. Justice D.Y. Chanchurji, so it is a tested case in case of our India International University of Goa. It was inaugurated by him only, I think, 1.5 years ago. And it has flourished like anything you all know. तो अब इस इंस्टीट्यूशन के भी आगे बढ़ने में कोई डाउट नहीं है। कुछ हाथ होता है ना, कुछ लोग मिट्टी छू देते हैं, सोना हो जाता है। तो इसलिए नाउ दिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद National Law University is bound to flourish. A very dynamic Vice Chancellor, Dr. Usha Tandon, is there. But it requires a lot of devotion of teachers.
teachers को भी, the Bar Council of India, the chairman I'm telling, the Bar Council of India established National Law School, Bangalore in the year 1980. एक छोटे से रेंटेड हाउस में शुरू किया गया. But Dr. Madhav Menon, late Dr. Madhav Menon and his team, they never cared for the money. It was their sincere effort and the honest devotion towards the institution कि इसको आगे बढ़ाना है. See what is National Law School Bangalore today. The devotion or honest effort of the teachers, it plays a very major role in the development of any institution. वो जहां कमी हुई, there are 27 national law schools today. But except 4 or 5, neither the students nor the guardians are interested in sending their children in the other general national law schools today. National law schools, 27, the various states they have established. Fortunately, Mr. Aditya Nath Jogi ji is the chief minister, और उन्होंने ये काम शुरू किया है. उनका इंटरेस्ट, उनका जो रुचि है इसमें वो हम देख रहे हैं. तो उससे भी मैं कह सकता हूं कि इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ने में और जमने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. 2-3 things are required. Infrastructure, that's the main thing. उसके लिए unless the state honestly grants the money, Bangalore में we started facing the problem only after a few years. इंस्टीट्यूशन को अपने पांव पे खड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है. उस समय तक स्टेट को पूरी तरह, maybe with regard to the building, an institution also require, apart from the administrative blocks, the classrooms, the hostels, a very good auditorium, which we could not establish up till now in Bangalore because of the fact that the state could not help us. तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और इस इंस्टीट्यूशन को अगर आगे बढ़ाना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा. हमारी डीसी साहब कहेंगी तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तो तुलसीदास जी ने कहा था, वो नहीं जानत है जब मैं कभी संकट मोचन नाम की. तो ये तो इंस्टीट्यूशन बड़ी छोटी चीज है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट को, उतने बड़े राज्य को, छोटे छोटे राज्यों में डेवलपमेंट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होता है. उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों को अगर कोई विकसित कर दे जहां सर कोई संसाधन है ही नहीं, कोई मिनरल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसको विकास के रास्ते पर ले आ देना, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेना, ये बहुत बड़ी चीज होती है. मैं समय का महत्व समझता हूँ, और सिंस इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लीगल एजुकेशन तो आता ही रहूँगा. आई एम अ मेंबर ऑफ द वेरियस काउंसिल्स. मिस्टर अश्विनी मिश्रा जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी का जितना डिवोशन इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में और इसको जमाने में रहा, मैं जानता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. और भी ऑनरेबल जजेज हैं यहाँ, सब लोग लगे हुए हैं. मैं ये कामना करता हूँ ईश्वर से
ये इंस्टीट्यूशन फले फूले आगे बढ़े। इलाहाबाद शुरू से एजुकेशन का हब रहा। यहाँ से IAS इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग बगल में है बिहार से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जितना IAS प्रोड्यूस करती थी धीरे धीरे ये हो गया। तो इलाहाबाद में वन इंस्टीट्यूशन ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन इट वाज मच नीडेड। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल CJI साहब को और सारे ऑनरेबल जजेज और जो भी इसके व्यवस्थापक हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। Thank you so much, sir. Your words have truly inspired us, and we clearly have the Midas touch now. We have amongst us a very important personality who initiated his law practice from Allahabad High Court and has a long, outstanding legal career. Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General, Uttar Pradesh, and Member General Council, Rajendra Prasad, National Law University, Prayagraj. Sir, I would humbly request you to please come forward and address our audience. Honorable Dr. Justice D.Y. Chandraoudgi, the Chief Justice of India, Honorable Mr. Yogi Adityanath Ji, Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Shri Manoj Mishra Ji, Judge Supreme Court of India and Visitor of Dr. Rajendra Prasad, National Law University, Prayagraj, Honorable Shri Arun Ansari Ji, Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad and Chancellor Dr. Rajendra Prasad National University, Prayagraj. I am seeing Honorable Mr. R. Bindal, Judge Supreme Court sitting in front of me. I am thankful for his coming, as well as the Chief Justices coming from Chhattisgarh, Mumbai, and also I welcome Dr. Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council of India, Dr. Usha Tandon, Vice Chancellor, Dr. Rajendra Prasad, National Law University, Prayagraj. Esteemed Honorable Judges of the Supreme Court of India and the Allahabad High Court, sitting and retired, their respected spouses, learned senior advocates and other advocates, distinguished academicians, senior officers of the state, students of law, member of press and print media, ladies and gentlemen who are all present here. It is a matter of great honor for me to stand today amidst a very distinguished gathering on the inauguration of Dr. Rajendra Prasad National Law University at Prayagraj. Dr. Rajendra Prasad was the first President of the Republic of India and had played a major role in making of the Constitution of India in his capacity as the President of the Constituent Assembly. He had deep association with the holy city of Prayagraj, as it was here in 1937 that Dr. Rajendra Prasad was conferred doctorate in law by the University of Allahabad. It is therefore heartening to know that a national university is coming up at Prayagraj in the name of our first President, Dr. Rajendra Prasad, in the 75th year of our independence, which is being celebrated as Amrit Kaal. Prayagraj has always been a seat of learning. In Sri Ramcharitmanas, we find reference to the visit of Bhagwan Sri Ramji at the ashram of Rishi Bharadwaj
situated on the bank of holy rivers of Ganges, Yamuna and Saraswati, revered as the goddess of learning. We have the cherished ideal of good governance in the establishment of Ramraj from the time immemorial. The portrait of Bhagwan Ram is depicted in the original copy of the Constitution of India, which reflects the timeless search of Indian civilization for the governance by knowledge and wisdom and the rule of law and justice. The age-old tradition of pursuing search for knowledge would extend to the field of law at Prayagraj with the establishment of National Law University, which has the distinction of having largest high court in the Indian Republic. We are fortunate to have amongst us the most illustrious legal personality of our country, respected Dr. D.Y. Chanchoniki, the Chief Justice of India, who is not only an exceptional academician, but with his quest for knowledge, wisdom, and justice, has acquired the status of a living legend to inaugurate the National Law University at the Prayagraj. Dr. Rajendra Prasad had emphasized, I quote, that without law there can be no liberty. Without justice there can be no law. Our respected Chief Justice of India, Honorable Mrs. Justice D.Y. Chanchon, has similarly emphasized the pivotal role of constitutional morality in upholding the fabric of our diverse society. In his words, the constitutional morality is the guiding spirit to achieve the transformation which, above all, the Constitution seeks to achieve. We are also fortunate to have with us today Honorable Shri Yogi Adityanath Ji, the Chief Minister of Uttar Pradesh, who envisioned the establishment of this National Law University in the name of Dr. Rajendra Prasad. Esteemed Yogi Ji is hugely loved by the citizens of Uttar Pradesh for providing good governance and ensuring that the state acts in aid of justice for all, which is the aim of our Constitution. We are also privileged to have today Honorable Mr. Justice Manoj Mishra Ji as the visitor of the university. Justice Mishra Ji commands great respect for the strength of his wisdom and knowledge and would guide the course of university towards higher learning. I am thankful to Sri Arun Bansali Ji, the Chief Justice of the High Court, with his wisdom will help the Law University in becoming an important institution of learning in the field of law. My esteemed colleague at the bar, Sri Manan Kumar Mishra Ji, will be of great assistance in raising this institution. Dr. Usha Tandon Ji has been the first Vice Chancellor of this university, has the task of the university to great heights, and I am sure that with her distinguished academic background, she will be able to do so in short time. The National Law University at Prayagraj has the good wishes of many eminent persons who are present here, but due to paucity of time, now I feel I cannot take names of all those persons. Lastly, I extend my good wishes to the National Law University for its bright future in creating legally trained minds who would act as soldiers in establishing order, protect rights, ensure justice, resolve disputes, promote equality, uphold democracy, and help in maintaining harmony and peace in society, thereby ensuring further rise of our great country for which Dr. Rajendra Prasad always stood. I am thanking you all. Jai Hind. Thank you
so much, sir, for enlightening us with your thoughts. It is a good fortune for us to greet the 51st Chief Justice of Allahabad High Court, Honorable Mr. Justice Arun Bhansali, and Chancellor Dr. Rajendra Prasad, National Law University, Prayagraj. His journey from a budding lawyer to the esteemed Chief Justice of Allahabad High Court is a testament to his dedication and prowess in the field of law. So if you could please come forward and share your thoughts with our audience. Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Shri Yogi Adityanath Ji, Chief Minister of Uttar Pradesh, Chairman of the General Council of the University, Honorable Mr. Justice Manoj Mishra, Visitor of the University, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice D.K. Upadhyay, Chief Justice, Bombay High Court, Honorable Mr. Justice Ramesh Sinha, Chief Justice, Chhattisgarh High Court, esteemed sister and brother judges, Professor Usha Tandon, Vice Chancellor of the University, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General UP, Member General Council of the University, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council of India, Member General Council of the University, teaching and non-teaching staff of this prominent university, distinguished guests, and ladies and gentlemen. It gives me enormous pleasure to be a part of this inaugural ceremony of this prestigious and prominent university. It is indeed a great honor for me to be standing here before such a distinguished gathering and making this address at the cusp of this historical occasion. Its inauguration by Chief Justice of India makes it more special. We are grateful to His Lordship for sparing a valuable time to be with us today. At the outset, I would like to congratulate everyone who are a part of this distinguished gathering for the inauguration and coming into existence of Dr. Rajendra Prasad National Law University, which is the newest law institution dedicated to legal excellence premised on interdisciplinary approach coupled with technology-driven applications. The pedagogy of National Law University makes an aberration from the conventional style of teaching, and high premium is put on critical thinking, innovative research, inculcating empathy with a quest for justice and technology-driven approach. Lord Buddha said that education is enlightenment. It is something which gives dignity to a person. As far as legal education is concerned, I am of the firm belief that the discipline of law creates a holistic approach to life, broadens the horizons, inculcates empathy, annihilates bias, prejudice, and stereotype in a person, and fosters rationality and pragmatic thinking. The importance of legal education can be fathomed from the statement made by Roscoe Pound, a prominent member of the Sociological School of Jurisprudence, according to whom the members of legal fraternity are the conscience keepers of the society. This statement underlines the paramount importance of the discipline of law and legal education. Having said that, it is also my belief that education has two functions. The present system of education is mostly insisting on the utilitarian facet only, leaving the moral facet to insignificance. Unfortunately, the quality of leadership is not inculcated in our education system, which is one of the main crises we are facing in our approach to legal education. Mere reasoning ability does not meet the demands of education, as character and moral development are imperative necessities. It is our responsibility to train the prospective students of law and prepare them towards nation building, which should be one of the core aims of education. This is precisely what Dr. Rajendra Prasad National University intends to offer
on the legal landscape and create an indelible footprint on the legal turf through its curriculum, which is based on critical thinking, research orientation, value enrichment, fostering leadership and nation building. I am confident that this university, along with its students, will lead the society in nurturing constitutional values and sense of humanity. And I wish the Vice Chancellor of this university, along with the faculty members, all the very best in realizing the objectives of the university. Before concluding, I would quote Eleanor Roosevelt, who said that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. We are all unique, but I think the luckiest are those who challenge themselves to dream impossible dreams, make them a reality, and ultimately leave behind a legacy. While concluding, I take this opportunity once again to express my deepest gratitude to Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Honorable Chief Minister, Honorable Mr. Justice Manoj Mishra, and others. I also extend my best wishes to the Vice Chancellor, faculty members, and students of the university. As we embark on this momentous occasion, let us celebrate not only the establishment of the university, but also the promise it holds for shaping the future of legal education and practice. May this institution continue to be a beacon of legal excellence and a source of inspiration for generations to come. Thank you. Thank you so much, sir. Your exuberant wishes means a lot to us. Our special guest for the day, Honorable Mr. Justice Manoj Mishra, is the sitting judge of the Supreme Court of India. He was elevated to the Supreme Court in February 2023 and has formerly served as a judge in Allahabad High Court. I warmly invite you, sir, to please share your words of wisdom with our audience today. My Lord, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Shri Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, my brother Judge, Justice Rajesh Jindal, who has graced this occasion, Justice Arun Bhansali, Chief Justice of Allahabad High Court, my brother and sister judges of the High Court of Allahabad, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General, Government of Uttar Pradesh, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India, and Professor Usha Tandon, Vice Chancellor, Dr. Rajendra Prasad, National University, Prayagraj. First of all, I would like to thank our Chief Justice, Justice Chandrachud, for accepting the invite and visiting the city after nearly 8 years. The city, whom everyone here adored him, and he was a role model not only for the judges, but for the students, for the legal community and the fraternity. And we had been watching his videos in the YouTube, even though his physical presence was not there. But he was virtually always present, not only in the media, but also in our art. Allahabad has always been known for its education and eminent scholars, not only in the field of law, but also in politics. Of late, the balance has tilted a bit and has gone to other shores. But Allahabad shall always remain in the heart of not only politics, but legal field as well. National University had been a demand for students in Allahabad
for a long time. And we were allocated some land at Jhalua, but the construction of the university and the campus has been delayed a bit. So this year marks the inauguration of the courses of the university. Though the infrastructure is at present not available, but they have taken certain premises from where the university would function. But with our dynamic Chief Minister, who would extend all possible cooperation for the funds and the infrastructure, I hope that the university would be functional and in place as shortly as possible. But when you have an erudite speaker on the dais and an eminent jurist in Justice Chanchur waiting, I would not like to waste time here and rather wait patiently for his speech to begin. All that I can say is that as a visitor of this university, I would keep a watchful eye. Thank you. थैंक यू सो मच सर। यह उन व्यक्ति के स्वागत करने का समय है जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता की प्रेरक शक्ति हैं। आज के विशिष्ट अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। वह एक उल्लेखनीय राजनीतिज्ञ और राज्य में शिक्षा संस्थानों के निर्माण के प्रबल प्रवर्तक हैं। महोदय, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आज के इस विधिवत शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधिपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति वरुण बंसाली जी, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा जी, आज के इस समारोह में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश विंदल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री नंद गोपाल नंदी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.के. उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, इस क्षेत्र के विशेषज्ञगण, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उषा टंडन जी और सभी उपस्थित महानुभाव,
प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी का महासंगम है। लेकिन इसके साथ ही यह धर्म, ज्ञान और न्याय की पवित्र त्रिवेणी भी है। 8 वर्ष के बाद इस प्रयागराज में एक नई उपलब्धि की कड़ी जोड़ने के लिए भारत के महान्यायविद, मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आगमन हुआ है। मैं राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चंद्रचूड़ साहब का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल न्यायिक इतिहास में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक स्मरणीय बना हुआ है। उन्होंने उस समय जो नजीर प्रस्तुत की न्यायिक क्षेत्र में, वो आज भी न केवल न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के मन में भी एक नया विश्वास पैदा करता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी के इस महासंगम में एक नई कड़ी जोड़नी थी, तो उस कड़ी का शुभारंभ किसके कर कमलों से हो। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय, इस नवगठित विश्वविद्यालय के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी को, विश्वविद्यालय के चांसलर और अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी को, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी को, यहां के सभी अपने माननीय न्यायमूर्तियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज आमंत्रित किया है। यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। याद करिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और इन 74 वर्षों में भारत के संविधान ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक नई प्रेरणा दी। दुनिया को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और जब भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहा हो, उन स्थितियों को स्मरणीय बनाने के लिए एक नई शुरुआत न्याय की इस नगरी में आज प्रारंभ होने जा रहा है। आप जब संविधान की डिबेट को देखते होंगे, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी जब भारत के संविधान की डिबेट चल रही थी प्रस्तावना को लेकर के। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार को लेकर के और अंत को लेकर के नहीं है, हम इति को लेकर के परेशान होते हैं कि समारोह कैसा हो। समारोह अच्छा होगा, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, बशर्ते हमने शुरुआत अच्छी की है। इति की चिंता मत करिए, अथ की शुरुआत यानी अथ की चिंता करिए, शुरुआत कैसे हम कर रहे हैं। और ये शुरुआत अच्छी हुई है
और वह भी भारत के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर, जो भारत गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, उनके नाम पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ आज भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। एक नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि जिन छात्रों का इसमें प्रवेश होने वाला है, उनमें से बहुत सारे छात्र, उनके अभिभावक भी इस समारोह के भागीदार बन रहे हैं। यह दिन उनके लिए बड़ा स्मरणीय होगा, क्योंकि जिस फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, उसका आज के समय के सबसे चमकता हुआ सितारा उनके सामने है, उनको गाइड करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए। तो स्वाभाविक रूप से वह उनके लिए एक नई प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम उत्तर प्रदेश को एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में के आसपास नौकरी सीधे यूपी के नौजवानों ने कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ बगैर बार और बेंच के सहयोग से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के बार को भी और बेंच को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। उत्तर प्रदेश के सुशासन के इस मॉडल को स्थापित करने के लिए उनका सकारात्मक सहयोग प्रदेश को हमेशा प्राप्त हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कुछ नया करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि सुशासन की पहली शर्त वह रूल ऑफ लॉ है, और यह तभी संभव हो सकता है जब उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राज्य सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि मेरे पास जब भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो, एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे वह यहां पे उच्च न्यायालयों का हो, जनपदीय इंटीग्रेटेड न्यायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के कार्यक्रम का हो, या फिर अन्य बाहर से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं के समाधान का हो। हम उन लोगों से कहते हैं कि देखो, लोकतंत्र में हमें डायलॉग के महत्व को समझना होगा। आपकी कोई बात हो तो सीधे पहले एक बार अपनी बात को शासन तक पहुंचा दीजिए। उसके लिए अनेक माध्यम है, आप उन तक किसी भी माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है तो उसका हम सकारात्मक रूप से उसका समाधान निकालेंगे और उसको हम समाधान तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या नहीं रहनी चाहिए, और समाधान में बदलनी चाहिए, और समाधान का रास्ता में हर हाल में निकालना, और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य निकलता है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है। आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी और प्रयागराज वासियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज वासियों के लिए इसलिए भी क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का एक लंबा समय यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में व्यतीत हुआ।
उनकी स्मृतियां यहां से जुड़ी हुई है और इलाहाबाद वासियों की स्मृतियां भी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से 8 वर्ष के बाद उनका यहाँ पे आगमन हुआ है, तो यह तो उनके लिए स्मरणीय है ही, लेकिन जब आए हैं तो यहाँ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी दे करके जा रहे हैं, तो यह और भी महत्वपूर्ण होगा कि इनकी यात्रा यहाँ के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, कई युगों के लिए स्मरणीय होने जा रही है। पीढ़ियां इस दिन के देख करके भावुक होंगी। वे इस दिन को देख करके जब भी कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, इन सभी को लेकर के उनके मन में एक नई प्रेरणा होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जो अभी कुलपति, जो यहाँ की नवनियुक्त कुलपति है प्रोफेसर उषा टंडन जी ने आपके सामने बताया कि यह फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पे BA-LLB के 5 इयर्स कोर्स का प्रारंभ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में 1 ईयर का LLM का कोर्स प्रारंभ होगा, फिर PhD के पाठ्यक्रम 3 वर्षीय PhD का कार्यक्रम भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। और इस दौरान अच्छा होगा यहाँ की फैकल्टी, अभी संसद में 3 नए एक्ट बने हैं। युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो, राज्य सरकार इसको पूरा सपोर्ट करेगी और मुझे लगता है इस दायित्व को भी इस लॉ यूनिवर्सिटी को अपने ऊपर लेना चाहिए कि वे यहाँ के प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को, हर जनपद से युवा अधिवक्ताओं को बुलाएं, क्योंकि आज अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने अपने स्तर पर बहुत कुछ करने का प्रयास किया है और आगे भी हमारा बार काउंसिल के शिव कुमार गौर हैं और भी यहाँ के उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। ये लोग अपनी बात को समय समय पर रखते आए हैं और मैं इस बात को उनको आश्वस्त करता हूं कि न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि उनकी अन्य सुविधाओं के लिए भी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ रह करके उनको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आज शुभारंभ के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके शब्दों ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ा दिया। The golden hour has arrived. It is about time to inaugurate the formal establishment of Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj. And to do the honors, may I request our chief guest for the day, the pride of our country, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India. I request the other dignitaries also to please join the chief guest for the inauguration and the garland ceremony.
Thank you so much, Honorable Justice, and all the dignitaries on the dais. Let us now have a virtual walkthrough of the proposed campus and the glimpses of the current campus of Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj. Can we have the video?
The much-awaited moment has arrived. It is an Herculean task for me to offer a brief introduction to a person as accomplished and renowned as our chief guest today, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India. He is the 50th Chief Justice of India, serving since November 2022, an inspiration for uncountable souls, including both young and old. His Lordship completed his Masters of Law and Doctorate degree from Harvard Law School. Dr. Justice enrolled as an advocate with the Bar Council of Maharashtra. He practiced law at the Bombay High Court and Supreme Court of India. In 2013, he took an oath as the Chief Justice of Allahabad High Court until he was appointed as a judge of Supreme Court in 2016. May I now humbly request the Chief Justice of India to share his multi-dimensional insights with our ardent audience today. The Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, my brother Justice Manoj Mishra, my very dear brother Justice Rajesh Bindal, both judges of the Supreme Court of India, Justice Arun Bansali, Chief Justice of the Allahabad High Court and Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, Justice Ramesh Khanna, Chief Justice Chhattisgarh, Justice Devendra Upadhyay, Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Manoj Kumar Gupta, judges, both brothers and sisters in the High Court of Judicature at Allahabad, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General Uttar Pradesh, Shri Manan Kumar Mishra ji, Chairman Bar Council of India, Professor Usha Tandon, Vice Chancellor, Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, members of the faculty, members of the bar, students and all who are present here. मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह का। मेरे लिए इस सम्मान का विषय है कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद में आप सबने मुझे अपनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बल्कि एक बड़े सम्मानित वकील भी थे। एक वकील के रूप में प्रयागराज से उन्हें बेहद नजदीकी संबंध रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून क्षेत्र में पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन और योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे भारत की संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान सभा के सभी सदस्य डॉक्टर प्रसाद को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुनने का मौका आया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए सबसे योग्य माना गया। इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जोड़कर हमने न सिर्फ डॉक्टर प्रसाद की विरासत को सम्मान दिया है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों से प्रेरित होने का भी काम किया है। इस मौके पर मैं विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री
मंत्री जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि मैंने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लगभग 3.5 साल यहां बिताए। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने न सिर्फ उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीशों के साथ कई अहम मुद्दों पर काम किया, बल्कि प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जाना। मैं अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बिताए अपने समय को याद करता हूं। बंबई उच्च न्यायालय से में काम करने के बाद जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया तो मैंने न सिर्फ इस उच्च न्यायालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को भी समझा। मैं समझता हूं कि यहां आकर मेरे जीवन में विद्या ग्रहण का जो प्रयास था वो एक दूसरे स्तर पर मैं ले जा सका। So that I always say Uttar Pradesh is the heartland of India. अपने कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला और मैंने जिला न्यायपालिकाओं से जुड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। Allahabad has remained a center for knowledge and exchange of ideas for centuries. The University of Allahabad, which was considered as the Oxford of the East, remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवंत उदाहरण है। This city is also associated with the names of several individuals who made a mark in the legal profession. साहित्य, कला, तहजीब, संस्कृति एवं कानूनी परंपरा को समेटे इस शहर में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि शहर को भी एक नया आयाम मिलेगा। ये अवसर न सिर्फ हमें कानूनी शिक्षा के बढ़ते आयाम के बारे में बताता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर कर सके। इसके साथ साथ आज के इस भाषण में मैं समाज में वकीलों की सकारात्मक भूमिका, विधि शिक्षा के उद्देश्य, विधि शिक्षा में व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों एवं उसके आगे बढ़ने के उपाय के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। First, about the role of lawyers. Since the Indian independence movement to the constitution making process and to contemporary Indian politics, lawyers have significantly contributed to nation building. We always feel that our role is to wear our bands and black coats and get the injunction of stay order or the bail for a client. That is important in itself because you do justice to the immediate cause at hand. But there is a wider process of nation building in which lawyers have a very vital role to play. Lawyers play a crucial and multifaceted role in society, contributing to the functioning of legal systems and promoting justice. They represent individuals and entities, ensuring that their rights are protected. This includes criminal defense, civil litigation, and advocacy for various legal issues. The role of lawyers includes representation of the marginalized and vulnerable communities, ensuring that they have a voice in the legal system. Every day in the work of the Supreme Court, we come face to face not only with injustice, but the quest of justice which is sustained by lawyers, pursuing causes which are popular and unpopular, clients high and low, clients who have a voice in the system thanks to the work of the bar.
The engagement of lawyers in pro bono work, providing free legal services to those who cannot afford it, is a crucial function of lawyers in society. Sir Ashutosh Mukherjee, a noted jurist and barrister, remarked, "A lawyer is more than a mere agent or servant of his client. He is also an officer of the court, and as such he owes the duty of good faith and honorable dealings to the courts, before which he practices the profession." What Sir Ashutosh Mukherjee said decades ago holds true, with only one little variation, that where we have said he, we must now say he or she, because this profession today is as much a representative of women in society. Thus, lawyers are entrusted with this obligation of being a carrier of the principles of justice. Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, writing about public service and legal practice, said, "Legal practice and public service are thus the alternating currents in my life. I do not know on which current my life ends, whether AC or DC." Thus, much like alternative currents, the life of a lawyer must be characterized by the constant oscillation between the realms of legal practice and public service, each exerting its unique influence in shaping society. M.C. Setalvad, the great jurist, also said, "We must not forget that we are a body of men whose essential function is to serve the nation. As the nation turns to its trained medical men or scientists to look after its health and scientific growth, so does a nation need lawyers to help in the administration of its justice and the building up and working of its laws." These thoughts emphasize on the indispensable role of lawyers as guardians of justice. I have quoted the words of a few legendary figures in our legal fraternity to inspire the young students to take up the study of law as a career choice with an open mind. Young law students must instill a sense of purpose, curiosity, and commitment to excellence, thereby enriching the fabric of the legal profession and advancing the cause of justice in society. Let me speak briefly about legal education in society. We have to re-emphasize that the legal profession is interconnected with the outlook of legal education. The shape and status of legal education determines the character of the legal profession. It is legal education which paves the way in the direction in which the legal profession will move. Law school shapes the character of every law student and consequently the character of the legal profession. The objective of legal education is to enable law students to acquire professional skills as well as assimilate responsibilities of a public service provider as a responsible citizen of the nation. The dual role of lawyers as professionals and social service providers can only be possible if law schools impart interdisciplinary and diverse education involving multiple subjects relevant in today's changing world. Dr. Ambedkar, writing on the thoughts on the reform of legal education in the Bombay Presidency, stressed the importance of interdisciplinary studies. He wrote, "From the educationist point of view, the study of law requires a study of certain other auxiliary subjects, without which the study of law alone would be incomplete equipment for the practice of the profession. What these auxiliary subjects should be will not be difficult to enumerate if you remember that a lawyer must have a legal mind. May I respectfully add that a lawyer must also have a social mind. To this I add that the focus of legal education must not only be on interdisciplinary studies, but on pragmatic legal education. Law schools must develop strategic plans that accommodate the changing market realities and clearly articulate their vision for the administration of justice. This National Law University must, in designing its policies, understand its responsibilities in the context of the evolving social landscape in Uttar Pradesh.
What are the new demands which industries are setting up for qualified legal professionals? What is the role of legal professionals in the changing social transformation in this state? And it is from that context that we must equip our young lawyers to be torchbearers for the future. Building a system of legal education that encourages interdisciplinary approaches to law with other social sciences ought to be the aim of law schools. A student of law also needs to be knowledgeable about political theory, economics, philosophy, and the history and culture of the nation in order to be able to influence institutional changes. The teaching of law in India has undergone significant developments over the years, but it also faces several challenges that warrant critical examination. The establishment of national law universities across the country has been seen as a positive step towards providing specialized and high-quality legal education. These institutions, known for their competitive admission processes, have contributed to raising the standard of legal education, but also remain limited in accessibility and effective social contribution. एक तरफ जहां हम नए विषयों जैसे कि स्पेस लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ आदि पर बात करते हैं, दूसरी ओर इसी बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि यह सब विषयों पर बातचीत एनएलयूज तक ही सीमित ना रह जाए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कानूनी शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं, इनका असर हर विश्वविद्यालय और कॉलेज पर होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सभी विश्वविद्यालयों में एक समान होनी चाहिए। So let the education which is taught at this particular National Law University reach out to other students who may not be as fortunate to come to Prayagraj, in the smaller towns of Uttar Pradesh, in the smaller towns in other states, because technology has given us that ability to reach to students beyond the physical space. बार काउंसिल से संबंधित देश के अन्य कॉलेज, खास तौर पर ग्रामीण भारत के लॉ यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में हमें शिक्षा के नवाचार से जुड़े प्रयासों को बल प्रदान करना चाहिए। Despite the developments in legal education, the contemporary Indian legal education system only favors certain English-speaking urban students. The data from diversity surveys of 5 national law universities, which came into existence much before, reveals that the composition of law schools, in terms of gender, region, and the premium attached to the fluency of the English language, and a stigma for a lack of knowledge of English language among students, acts as a hindrance to the full participation and assimilation of students coming from diverse backgrounds. आज टेक्नोलॉजी के तहत भाषिणी सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने 1950 से 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के करीब 36,000 निर्णयों को अनुवादित किया है। अंग्रेजी भाषा का तो उपयोग सर्वोच्च न्यायालय में होता है, क्योंकि हर एक राज्य से लोग आते हैं यहाँ पर वकालत करने। कई बार जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस था, तो अंग्रेजी इस सीमित रहती थी, मे प्लीज योर लॉर्डशिप्स। उसके बाद सारा हिंदी में ही डायलॉग होता था, और मैं अपनी बम्बईया हिंदी में मैं भी अनुवाद करता था उनके साथ। पर कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमने जो 36,000 निर्णयों का अनुवाद किया है, इसका कारण यह है और इसका उद्देश्य यह है कि हम हर एक नागरिक को, जो कि अंग्रेजी जानते नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन तक विधि को हम उनके घर में, उनके हृदय में, उनके द्वार पर हम ले जाएं। और ये मुफ्त सेवा है, डिजिटल एससीआर मुफ्त सेवा है। आज आपको किसी प्राइवेट पब्लिशर को साल के 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये मुफ्त सेवा और क्वालिटी सेवा है। मुफ्त यानी क्वालिटीहीन सेवा नहीं है, क्वालिटी सेवा है जो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए प्रदान कर रही है। तो हर एक विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में आप इसका जरूर उपयोग लीजिए।
Even the opportunities such as internships, moot courts, and competitions are conventionally designed to favor students coming from the elite and English-speaking backgrounds. Therefore, college campuses must be a right setting for a culturally diverse student population. They must provide a dynamic place where differences in opinion and beliefs interact. Rabindranath Tagore remarked that an educational institution should not be a dead cage in which living minds are fed with food that is artificially prepared. The purpose of a university education is to cultivate wisdom, judgment, and virtue in students. And I appeal to the Prayagraj and Dr. Rajendra Prasad National Law University to ensure that the medium of instruction takes place in Hindi, so that the best students from Uttar Pradesh will become the best lawyers who will practice before the High Court. Many of them will join the district judiciary. Some of them will join politics. Others will do what they want to do, but they will keep the great cultural and historical tradition of our state burning bright. The lack of diversity in our educational institutions fails to create both virtues and generate social benefits. Research has shown that institutions with more diversity are more likely to produce an inclusive, vibrant, and democratic citizenry. It improves learning outcomes, citizenship, and cultural engagement among students. A comparative report recently published has shown that students report less discrimination and bias at institutions where they perceive a stronger institutional commitment to diversity. Schools that have diversity on college campuses and including mentoring and counseling for students create more productive environments for everyone. जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की बात करेंगे, तब ही समाज में बराबरी की बात आगे बढ़ेगी। शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों और दायित्वों का बोध होता है। इससे वे समाज के सकारात्मक बदलाव में सक्रिय भागीदार बनते हैं और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं। So it is only when we provide equal opportunities to everyone, access to education, are we preparing them for access to equal opportunities and employment. By prioritizing equal opportunities and access to education, our society will pave the way for a more inclusive and equitable future, where every individual has the chance to thrive, succeed, and contribute to the collective prosperity of society. Thus, at this auspicious moment of the inauguration of a new university, we must commit ourselves that the space of the university will be free from marginalization and will ensure the effective participation of students coming from diverse backgrounds, as these are the core principles on which educational institutions are premised. इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहूंगा, जो प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक चेतना नहीं जगाती है, ये व्यक्तिगत हितों का एक माध्यम बनकर रह गई है। प्रेमचंद ने आगे लिखा कि विश्व भर में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था ने डर, ईर्ष्या, स्वार्थ से मानवीय भावनाओं को बढ़ावा दिया है। आपने सबने गबन तो पढ़ा ही होगा। मैंने बहुत 7-8 बार स्कूल में गबन का उपन्यास पढ़ा था। आज के दौर में प्रेमचंद की बात कितनी सही और कितनी गलत है, ये सोचने के लिए मैं आप पर छोड़ देता हूं। पर इस बात पर जोर देता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय भावनाओं को समझना, समर्थन करना और उन्हें संरक्षित करना होना चाहिए। इससे लोगों के बीच संबंधों में सहानुभूति, समझदारी और सहयोग के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम समृद्ध और सहयोगी समाज की नींव रख सकते हैं, जो भावनात्मक संवेदनशीलता, समर्थन और सहयोग पर आधारित होता है। आज जब हम सब एक नए विधि विश्वविद्यालय के शुरू होने के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम विधिक शिक्षा को किस ओर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वविद्यालय को समावेशी एवं दूरदर्शी होने के साथ साथ भविष्य की आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में समय के साथ बदलाव, हाशियों के समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देना, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को संस्थानिक उपायों के जरिए मुख्य धारा में शामिल करना, मेन स्ट्रीम में शामिल करना, उनकी क्षमता में वृद्धि और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना एक विश्वविद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए। Today, with the establishment of the National Law University in Prayagraj, the state of Uttar Pradesh now has two national law universities. One in Lucknow, the Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, and one in Prayagraj. The NLU in Lucknow was established almost 2 decades ago. Several graduates of NLU in Lucknow have worked in my own chambers as interns, as law clerks. Many graduates qualified for the judiciary, while many are practicing before different courts and are a source of great pride to us. I am hopeful that NLU in Prayagraj will follow a similar trajectory, or even better it. What better than competition between two national law universities in the same state? Furthermore, it is now the task of these two national law universities in Uttar Pradesh to take a lead in shaping the discourse on legal education, to provide necessary support to other universities and colleges in the state. It is only with the collaborative efforts between the institutions that we will be able to make necessary changes in the affairs of legal education and the legal profession. This is the beginning of a new dawn for this newly established university. I hope it will establish a new standard in legal education and will emerge as a center for excellence in education. अंत में मैं आपके साथ संत कबीरदास के एक दोहे को दोहराता हूं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब संत कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है, हम जैसे जजेस को ये आदेश है, ना ही अधिक चुप रहना भी ठीक है। मैंने आज आपके समक्ष बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी और अब संत कबीर की बात को दोहराते हुए और अधिक नहीं बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं। Allahabad High Court and the city of Prayagraj are truly like my second home. I owe everything. I owe everything to have had the good fortune to have lived for almost 3 years in this blessed land. And I always feel elated to come to the city. Thank you. Namaskar. Thank you for the